ready for the mission. So at T-minus 30 minutes, the real-time steering program, which has been generated based on the few hours of measured wind profile, has been loaded onto the onboard computer from the launcher. Roger. The countdown is at minus 19 minutes 42 seconds. In fact, just few minutes back, they started raining a bit heavily in the launch base. The things are looking quite good and green. 30 seconds. Star 100 confirms normal safe signal. अभी कुछ ही क्षणों पश्चात प्रक्षेपण की अनुमति की घोषणा करेंगे मिशन डायरेक्टर। और यहाँ पे बहुत तेजी से बारिश हो रही है। सुबह से इसका अंदाज लगाया जा रहा था। Vehicle director, mission director, GSLV D6 launch vehicle is ready for GSLV D6 GSAT mission. So all eyes on the mission director giving authorization for the launch. Mission director, GSAT-6 spacecraft is ready for launch aboard GSLV D6 GSAT-6 mission. MD Roger. This range operation director to mission director, range is ready for GSLV D6 GSAT-6 mission. MD Roger. PTC director to mission director. So we are just going through the final phase of authorization by various mission executives. Event number 535 completed. MD Roger. और इस तरीके से मिशन डायरेक्टर ने The launch vehicle and subsystems are all normal. All the health parameters are confirmed. The range, ISTRAC, spacecraft and MCF are ready. MRR and lab have cleared all the activities. With all these inputs, GSLV D6 GSAT-6 mission is hereby authorized. Control Roger. So at T-minus 19 minutes, 18 minutes, all stations start, mission director cleared for launch. T-minus 19 minutes, the mission director has just authorized the launch. Roger. Confirmation to the vehicle director to proceed with the further launch operations. Received for PLO. In fact, this authorization is given based on the readiness of the various systems. The launcher, which is given by the vehicle director, the satellite from the spacecraft director, the range systems by ROD, range operations director, and telemetry tracking and command network, TTC, responsible, who is, these are all the mission executives who give authorization to the vehicle director in terms giving to the mission director for going ahead with the further operations. जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, जबकि आपने देखा अभी मिशन डायरेक्टर ने T-19 मिनट पे जब ऑथराइज कर दिया, अनुमति दे दी प्रक्षेपण की। ट्रैकिंग, टेलीकमांड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरफेस सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर्स, रेंज सेप्टिस, रेंज, ट्रैक, सैटेलाइट साइड से, व्हीकल साइड से, सभी के गहन अध्ययन के बाद ये अनुमति प्रदान की जाती है। आज प्रक्षेपण स्थल पर आसमान में घने बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, और हमने देखा कि प्रक्षेपण के कुछ ही समय पहले तक बारिश लगातार होती रही। चारों तरफ पूरी तरह से हमारा यान भीग चुका था, मगर जैसे उसे तैयार कर दिया गया हो प्रक्षेपण के लिए। और आज जमीन पर हवा की गति भी खासी थी, लेकिन इससे रफ्तार से बहने वाली हवा से यान को किसी तरह की कोई खतरा नहीं था। वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर मापी गई वायु गति कार्यक्रम के अनुसार भी जरूरत पड़ने पर पुनः अभिकल्पित किया जा सकता है, पर ऐसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और इस तरीके से सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। Minus 16 minutes. So the next important event that is going to come up is at minus 14 minutes when we enter the automatic launch sequence based on the authorization. And in fact, after giving the authorization to initiate the automatic launch sequence, at T-minus 12 minutes, the automatic launch sequence program gets initiated. And from this event onwards, the vehicle level operations are taken care by the onboard computer system, including all decision making and issue of commands. As I told you, we have a planned liftoff at 16:52 hours, which is minus 15 minutes 32 seconds from now. And at the opening of the launch window is 16:52 with a liftoff launch window of nearly 2 hours 30 minutes. So barring any unforeseen event, we expect the launch to take place at the beginning of the launch window itself. A view of the launcher at the umbilical tower. I think the rain has just stopped and things are looking good now. जी हाँ, अभी बारिश का हल्का हल्का रूप जो दिखाई पड़ रहा था बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। सामान्य समय बारिश लगभग बंद हो चुकी है। हम प्रक्षेपण 15 मिनट की दूरी पर
काउंटडाउन की सारी गतिविधियां अबाध रूप से जारी हैं। सभी वैज्ञानिक अपने आंकड़ों पर नजर जमाए हुए हैं। श्रीहरिकोटा के इस प्रक्षेपण केंद्र में उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर चाहे वो निम्न कक्षा, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह हों या भूस्थैतिक अंतरण कक्षा में छोड़े जाने वाले उपग्रह। इस प्रक्षेपण परिसर में प्रमोचन यान के संयोजन से लेकर ईंधन के भंडारण, उसके यान में भरने, चेकआउट और प्रक्षेपण क्रियाकलापों से संबंधित सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पृथ्वी के वातावरण अध्ययन के लिए साउंडिंग रॉकेटों का प्रक्षेपण भी यहीं से होता है। प्रथम प्रक्षेपण स्थल और उसके बाद द्वितीय प्रक्षेपण स्थल जहां से ये प्रक्षेपण होना है आज, ये द्वितीय प्रक्षेपण जो स्थल है वो उपग्रह प्रक्षेपण हेतु तथा अगले प्रक्षेपण के शीघ्र समायोजन के लिए है। हम आपको बताते चलें कि अगले माह PSLV की सारी तैयारियां जो हैं प्रथम प्रक्षेपण स्थल पर चल रही हैं। ये द्वितीय एक अतिरिक्त सुविधा है जो समायोजन, अंतरण एवं प्रक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित है। Automatic launch sequence of GSLV D6 GSAT-6 mission. PLO of 4 tank engaged. We just heard the authorization being given for automatic launch sequence to be engaged. It will take approximately another 2 minutes when the ALS automatic launch sequence exactly get engaged. Last minute 30 minutes 30 seconds. जी हाँ, इस समय Bottles are ready. हम लगभग 13 मिनट 25 सेकंड की दूरी पर हैं और आइए हम इस समय मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर का दृश्य आप जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, विभिन्न वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सभी हमारे साथ इस समय प्रक्षेपण का आंखों देखा हाल देखने के लिए बिल्कुल सामने प्रक्षेपण यान बड़े गर्व से खड़ा हुआ। Chilled helium supply on O side is resumed. लगभग 12 मिनट 50 सेकंड की दूरी Nominal filling. इस भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान GSLV जिसे 3 चरणों में बनाया गया है। प्रथम चरण ठोस ईंधन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB वाला S139 है जिसका विशिष्ट संवेग 166 सेकंड है तथा प्रणोद 4700 किलो न्यूटन है। इसका प्रज्वलन काल लगभग 100 सेकंड है। प्रथम चरण में ठोस ईंधन वाली मोटर के साथ ही चारों ओर 4 स्टेप ऑन बूस्टर भी संयोजित हैं। प्रत्येक लगभग L40H विकास टू इंजन मोटर जिसका प्रणोद 680 किलो न्यूटन तथा विशिष्ट संवेग 262 सेकंड है। इसमें अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन UDMH UH25 को ईंधन के रूप में तथा N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन द्रव ईंधन आधारित बूस्टर का प्रज्वलन काल लगभग 160 सेकंड है। द्वितीय चरण में विकास 4 इंजन जिसका प्रणोद 720 किलो न्यूटन तथा विशिष्ट संवेग 295 सेकंड है। इसका प्रज्वलन काल 150 सेकंड है जिसमें पुनः एक बार UDMH को ईंधन के रूप में तथा N2O4 को ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है। तृतीय चरण में क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS-12 इंजन 73.5 किलो न्यूटन प्रणोद के साथ विशिष्ट संवेग 450 सेकंड हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि GSLV Mark 1 में 12 के RB KVD-1 नामक इंजन प्रयुक्त किया गया था। So, minus 11 minutes, the automatic launch sequence has been engaged. Now, before we go through the long process of automatic launch sequence clearances, we will bring to you some of the GSLV launch campaign activities involving integration and various stage elements and satellite. So what you're seeing on your screen is the flagging off of the first hardware of the solid motor, which is the core stage of GSLV. It's called the core-based route, and the first solid So after completion of all the 5 segments, we will have the igniter assembly, thereby completing the first solid motor stage of GSLV. जी हाँ, ये ठोस मोटर S139 है जिसे 5 घटकों से निर्मित किया गया है। इन्हें एक एक करके समायोजित किया जाता है मोबाइल टावर के साथ में, और ये आप बड़े ध्यान से देख पा रहे होंगे
कि सारे वैज्ञानिक अभियंता जो हैं वो से एक साथ के ये इग्नाइटर असेंबली है जिसे धीरे धीरे नीचे उतार के और मोटर के साथ समायोजित कर दिया जाता है. So after completing the first stage, what is being lowered now is the vented inter stage. I will describe a little bit on this in the subsequent phase. And this is the 1/2 stage, the middle inter stage. This inter stage is basically used to connect the second stage to the first stage. Now on your screen is the liquid strap-on. As you are aware, the first stage of GSLV comprises of a solid motor S139, which is strapped by 4 liquid strap-ons. So first of the liquid strap-on is being erected vertically and getting mated to the solid motor. So this process will be continued for the remaining 4 strap-ons. जी हाँ, यही वो L40H विकास 2 इंजन है जिन्हें चारों ओर ठोस मोटर के चारों ओर लगा दिया जाता है. इसमें जैसा मैं आपको बता रहा था कि UDMH UH25 को ईंधन के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को प्रयुक्त किया जाता है. Temperature oxidized side is 67 Kelvin. So after completing the first stage assembly with 4 liquid strap-ons, the second stage, which again is a liquid stage containing 39 tons of propellant, UH25 and N2O4, is being lifted up to be placed on the first stage. And with this assembly, we will complete the first 2 stages of the GSLV launch vehicle. जी हाँ, तो ये प्रथम चरण जो थी वो एक कॉम्बिनेशन था जहाँ पे ठोस मोटर और द्रव का यूज किया जाता है. द्वितीय जो चरण जो है वो द्रव इंजन वाली है. द्वितीय चरण में विकास 4 इंजन का प्रयोग किया जाता है. This is the most complex, technologically complex cryogenic stage, which is the upper stage of GSLV. And in fact, if we look at the velocity addition that is given by this stage to the overall vehicle, it delivers almost 50% of the velocity that is required for the satellite to reach the orbit from the Earth. So integration of the indigenous cryogenic upper stage to the second stage, and what you're seeing on your screen is a GSAT-6 satellite in the satellite preparation facility, which is at the launch base undergoing various checkout operations as a part of pre-launch campaign activities. जी हाँ, यही वो GSAT-6 उपग्रह है जहाँ पे क्लीन रूम में इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है. फिर से एक बार परीक्षित किया जाता है. सोलर पैनल वगैरह को डिप्लॉय कर लिया जाता है. उनके सारे सेल्स के प्रदीप्त को चेक कर लिया जाता है. उसके बाद उसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भर लिया जाता है प्रणोदन के रूप में. उसके बाद जो सारे घटक हैं जैसे अनफोल्डेबल एंटीना जो भारत पहली बार प्रयोग कर रहा है, सौर पट्टिकाएं दोनों तरफ समायोजित कर दी जाती हैं. फिर उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट फेयरिंग जो शील्ड है, पेलोड फेयरिंग शील्ड, उसे समायोजित कर दिया जाता है. So unlike PSLV, the spacecraft gets assembled to the payload adapter in the clean room facility. It is encapsulated inside the payload fairing, and the entire encapsulated assembly with the satellite inside is taken to the launch pad and then finally placed on top of the launcher. If you look at the way the PSLV configuration, we have the satellite assembly on the launcher and the fairing closure. This is slightly a different concept, and the encapsulated assembly of GSAT-6 with payload fairing being put on the launcher. And after the vehicle is fully assembled, integrated and checked out, as you can see, the entire vehicle on mobile launch pedestal is being moved from the vehicle assembly building, and it will be finally parked in front of the umbilical tower. N2 gas supplied to cryo. This vehicle is being moved to the umbilical tower for the final checkout operations. This activity in fact happened on the 19th of this month, and it's now positioned in front of the umbilical tower. 581 completed. जी हाँ, तो 19 अगस्त को खत्म हुई. ये प्रक्रिया ऐसी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जहाँ पे पूरे का पूरा रॉकेट जो है वो एक तरह से असेंबल्ड फॉर्म में समायोजित रूप से वो उसे प्रक्षेपण स्थल तक पहुंचाया जाता है, जहां पे उसे अम्बिलिकल टावर्स पे लगाने के बाद में प्रक्षेपण बोर्ड की जब अनुमति मिल जाती है, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होती है जहां पे द्रव ईंधन को भरना शुरू किया जाता है. So countdown is at -5 minutes, 43 seconds. A quick rundown of the countdown operations that began yesterday. The total countdown for this mission was 29 hours, which began yesterday, and the major operations during the countdown process involves primarily the electrical checkout and health check operations for the launch vehicle and the satellite, and most importantly the propellant filling operations of the liquid and cryogenic stage. So what you are seeing is the view of the mission control center with all the mission executives being seated. At the beginning of the countdown yesterday, the fuel and oxidizer were loaded into the second stage GS2, and once this got completed,
the fuel loading in all the 4 liquid strap-ons were performed, which eventually was followed up with loading of the oxidizer in all the 4 liquid strap-on motors. In fact, all these operations got completed today very early morning. And just 4.5 hours from now, the filling of liquid oxygen in the cryogenic stage was initiated, and this operation lasted for nearly 2 hours. Event number 579. And 2 hours before, from where we are now, the loading of liquid hydrogen was initiated, and the operation lasted for nearly 1 hour. So now in GSLV we have totally 200 tons of unstorable liquid propellant and 12.5 cryogenic propellant loaded into the launcher. So the countdown is at -4 minutes 25 seconds. जी हम करीब 4 मिनट 20 सेकंड की दूरी पे हैं। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि प्रक्षेपण के ठीक पहले हम ठोस मोटर S139 के साथ संयोजित 4 स्टेप-ऑन बूस्टर्स L40H को प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद उसके कुछ क्षणों बाद S139 का प्रज्वलन होता है। That's the difference, Radhakrishnan ji, ki that strap-on gets ignited, and then after some time only that solid motor gets ignited. Yes, Alok, you are right. I think maybe if you see one of the major difference that you see in PSLV from GSLV, in GSLV we have 4 liquid strap-ons. So once we have a liquid strap-ons, once the ignition command is given, it takes a finite time for it to build the thrust, and it has a flexibility in case the desired thrust is not reached. It has the flexibility to shut off the valves so that the engine can be cut off. Unlike the solid motor, which once ignited, it's difficult to control the thrust. So if you look at the liftoff sequence of GSLV, we have 4 liquid strap-ons. So these liquid strap-ons are ignited approximately at 4.8 seconds before the actual ignition of the S139. And after giving the ignition command, at 3 seconds later, after the ignition, the thrust would have built up to almost 90% of the desired thrust. So what is done is, in the ground, they try to check the performance of the engine by looking at the chamber pressure. And if the chamber pressure of all the liquid strap-ons are found to be okay, they progress with the next activity, which is another very important activity called as the release of the launch hold release system, LHRS. This particular system is the one which is responsible for holding the launcher or the launch pad. जी हाँ, इस समय आप मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। शायर के डायरेक्टर, चेयरमैन इसरो के श्री किरण कुमार सर, और बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों ये बातें जो अभी राधाकृष्णन जी ने शेयर की कि चारों स्ट्रैप-ऑन्स जो होते हैं, जी हाँ, ये पूर्व चेयरमैन इसरो के राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर सुरेश सर हैं जो साथ में बैठे हुए हैं। इस समय हम करीब 2 मिनट की दूरी पर हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद होगा कि जब जनवरी 2014 में हमने GSLV D5 से GSAT 14 को प्रक्षेपित किया था, उसका भार 1982 किलोग्राम था, 1982 किलो। और आज जब GSLV D6 से GSAT 6 का प्रक्षेपण किया जा रहा है तो इसका भार 2117 किलोग्राम है, माने लगभग 135 किलोग्राम अधिक। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं राधाकृष्णन जी की इतने महीनों में, लगभग 19 महीनों में 135 किलोग्राम अधिक, ये महत्वपूर्ण बात है। Yes, Alok, you are right. I think if you look back the last mission of GSLV, which was GSLV D5 with GSAT 14, the spacecraft from 1982, and now the capacity in the next flight itself has been increased by almost 135 kilograms. So there has been definitely some payload improvement packages that have been adopted for this GSLV D6 flight. And one of the very important thing that I have come across is the major change has been the optimization of the mass, overall mass of the cryogenic upper stage, basically the dry mass, which amounted to almost 60 to 70 kg performance improvement over its earlier flight, the GSLV D5. So in addition to this mass optimization, which is generally a continuous process as we go through the development of any particular launch vehicle, I think this process has been adopted by optimizing at the relevant elements. So countdown is at -57 seconds. इस समय आप स्क्रीन पे VSSC के डायरेक्टर, इसरो के चेयरमैन, शार के डायरेक्टर और LPSC के डायरेक्टर के, और इस समय देख पा रहे हैं कि आइजैक के सेंटर डायरेक्टर, सभी को बड़े ध्यान से चीजों को देख पाते हुए इस समय हम करीब 29 सेकंड की दूरी पर। तो आप काउंटडाउन के साथ हमारे अपने दिल को, धड़कनों को थामिए, हम भी शांत आपके लिए प्रतीक्षा करते हैं। -25 seconds. Yes to VSCP open. -20 seconds. Ignition arm before GS1. 15 seconds. L40 accumulator charging completed. 10, 9, 8, 7, 6,
+6, +7, +8, +9, +10 seconds. Auto tracking. V2 tracking. Tracking. +15 seconds. Master stage performance normal. +20 seconds. +25 seconds. +30 seconds. +35 seconds. +40 seconds. +45 seconds. +50 seconds. First stage performance normal. +55 seconds. +1 minute. Star 1 in main auto. Star 2 in main auto. In view of the mission control center, the executives very closely looking at the plots, the plots of the L40 strap-on pressure type term, the S139 motor, and here is the plot of the ground trace. So 100 seconds into the flight. Then very shortly we will be having the burn out of the solid motor. S139 Yes, burn out. S139 has burnt out, and it is now the 4 liquid strap-ons which are basically lifting the entire launcher and going through the next phase of activities. Another important event that is going to come up subsequently will be the shut-off of the 4 liquid strap-on motors, followed by ignition of the second stage, and then we'll have the flight of the second stage and the cryogenic stage. So right now we are at 132 seconds. Performance looking very nominal. Vehicle at 61 kilometers and velocity of almost 2 kilometers per second. जी हाँ, लगभग हम 143 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर चुके हैं और करीब करीब 122 किलोमीटर के परास पर. So GS1, GS2 separation, GS2 has ignited and the vehicle is going through the second stage of flight now. प्रथम चरण जो 165 है seconds. वो अलग हो चुका है और द्वितीय चरण जो है प्रज्वलित होके निश्चित रूप से अपने गंतव्य की ओर. आप देख पा रहे होंगे कि अनुमानित और अवलोकित पथ दोनों एक दूसरे को लगातार अनुसरित करते हुए. इसका मतलब यह है कि हमारा जो रॉकेट है, हमारा जो प्रमोशन यान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पथ अवलोकित करता हुआ, आलोकित करता हुआ एक साथ GSAT-6 को लेके आगे बढ़ रहा है और हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं एक महत्वपूर्ण चरण के इस समय. What you're seeing on your screen is the time versus altitude plot and the velocity plot. I think very close match with the pre-flight predictions. The events after the L40 shutoff happen so fast. You know, we have the L40 shutoff, we have the GS1, GS2 separation, followed by vented interface separation, and then the closed loop guidance initiation. All these events happen within a matter of 4 to 5 seconds. So right now the vehicle is going through the closed loop guidance algorithm. The payload fairing has just been separated at 230 seconds, and the vehicle has almost crossed the dense atmospheric phase and the altitude is around 115 kilometers. जी हाँ, लगभग 230 सेकंड के बाद हीट शील्ड सेपरेशन उसमें सुरक्षा कवर जो था उसके पृथक्करण हो चुका है उसका, और इस समय जो उपग्रह है वो सीधे एक्सपोज हो चुका है एनवायरनमेंट के लिए. और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय सीधा जो भार है, जो ऊष्मी लोड है, वो सीधा ऊष्मी भार जो है वो उपग्रह पर आपतित होता है. So very close match, time versus altitude. What you're seeing on your screen, the red one is the altitude profile, and which is covered by very closely by the flight data that we are getting from the launcher, from the telemetry system. And the top curve is basically the velocity curve, very close match with respect to the pre-flight flight. So right now the time is 279 seconds. Almost the vehicle has traversed a range of 550 kilometers, altitude 130. So very shortly we should hear the announcement for, yes, GS2 shut-off command has been issued. GS2 The second separated. stage has been separated, and cryogenic command. stage ignition command has been given.
जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्षण जब क्रायोजेनिक जो इंजन था उसको इग्नाइट कर दिया गया हो, So, कंफर्म हो चुका है। Cryogenic ignition has been confirmed. ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो द्वितीय चरण जो है उसके शट ऑफ होने के बाद, बंद हो जाने के बाद में तृतीय चरण के कमांड प्रज्वलन के कमांड कर देने के बाद कंफर्म आना, और इसके बाद ये लगभग अगर हम माने तो 718 सेकंड तक प्रज्वलन चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, इसलिए इसरो के लिए ये चरण निश्चित रूप से अपने आप में एक आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। So this is a very important announcement we just heard. The cryogenic stage performance normal. This is what we have been waiting for from the last launch to the now. And if you look at the time instant and the velocity and the altitude plots, very closely matching, which basically indicates the acceleration of the cryogenic stage has been progressing exactly as per the plan. राधाकृष्ण जी, हम आज समूचे देश के साथ इस प्रमोचन से संबंधित एक और विशेष जानकारी बांटना चाहेंगे। आपने कई बार सुना होगा दर्शकों कि हम स्वदेशी तकनीक से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। ये चरण इसलिए इतना जटिल और तकनीक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन द्रव गैसों का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं, उनका भंडारण, उनके नियंत्रण व सुनिश्चित प्रवाह के लिए प्रयुक्त विधि व यंत्र, उसमें उपयोग में लाए गए पदार्थ और उनके गुणधर्म बेहद जटिल और गहन अध्ययन और अनवरत प्रायोगिक अनुभव चाहते हैं। हाइड्रोजन को लगभग -253 और ऑक्सीजन को -193 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर संचित किया जाता है। क्या हम यान के प्रक्षेपण के साथ ही कोई विशेष तैयारी करते हैं? What preparation do we require before cryoignition right from the first stage, Radhakrishnan ji? This is very important. Alok, thank you very much. I think before I just explain the remaining portion of the slide, I would just like to inform the viewers. The second stage, the cryogenic stage, burns for almost 720 seconds. The flight time is now 420, and if you can see on the screen, the velocity imparted to the vehicle is almost 5.37. The nominal orbit for this mission is the GT orbit, geosynchronous transfer orbit, where the perigee will be 170 kilometers, and we would require something like 10.2 kilometer per second velocity to be imparted to the satellite to place it in an GT orbit of say 170 by 36,000. Just coming back to question of Alok, you are right. I think cryogenic stage, because of the extremely low temperature conditions, the handling of the cryogenic stage both on the launch pad and otherwise during the flight is a very complex phenomena. So if you look at the sequence of operation that the cryogenic stage goes through, even during the first stage flight, only 90 seconds into the flight of the first stage, almost for 200 seconds before the actual cryogenic stage is ignited, it goes through a series of preparations during the first stage flight itself. Basically trying to bring the cryogenic stage at an instant where it is ready to ignite, where the lines are being depressurized, serviced, and brought to the conditions where it is ready for ignition. So it's a very complex technology by itself because of the low temperature handling conditions, which is not the case when you're talking about earth storable or solid propellants. In fact, हमें लगभग जो वेलोसिटी है, उसको जो वेग कमान है, लगभग 9.779 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त करना है, और जो ऊंचाई प्राप्त करनी है वो 214.35 किलोमीटर प्राप्त करनी है, जो हमें लगभग प्रज्वलन के 17 मिनट के बाद हासिल होगी। इस समय हम लगभग 8 मिनट 45 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और जो हमारा अवलोकित पथ है यान का, जो अभी लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ, निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे अनुमानित जो पथ था उसका अनुसरण करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लगभग 542.5 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए 5.89 किलोमीटर प्रति सेकंड का गति प्राप्त कर चुके हैं, और इस समय हम 1960 किलोमीटर पर आस पर हैं और ऊंचाई 145 किलोमीटर प्राप्त कर चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। Yes, 560 seconds. Velocity is almost 6 kilometers per second, and the vehicle has traveled a range of almost 2,000 kilometers. Now, if you look at the cryogenic stage, which burns for almost 720 seconds, out of the 720 seconds, it operates in a kind of slightly thrust augmented mode, which is basically required to increase the overall capability of the launcher. So in the first 425 seconds, the thrust is augmented by 11% from its nominal thrust of 7.5 tons. And this augmentation of the thrust is the one which is responsible for delivering a heavier payload into the desired orbit. So right now,
the cryogenic stage is going through the operated mode, maybe in another 200 seconds, the thrust will be brought back to the nominal conditions, where it will continue to burn for the next 200 to 300 seconds in a thrust of 7.5 tons. In fact, this kind of profile of thrust operating for a particular duration and coming down to a nominal thrust is desired based on the mission design. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमको किस तरह का अभियान चाहिए, किस तरह का इंक्लिनेशन चाहिए, किस तरह का जो वेग वेक्टर है वो चाहिए। इसलिए उसी दिशा में इस तरह के जो अभियान होते हैं, उनकी जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो प्रादर्श हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। इनफैक्ट बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा प्रथम चरण द्वितीय चरण से सेपरेशन, या द्वितीय चरण का तृतीय चरण से सेपरेशन। ये जो पृथक्करण है ये बेहद आवश्यक है कि वो सुरक्षित हों और संघट्ट मुक्त हों। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। GSLV D6 में ऐसी कुल 4 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद जो GSAT-6 उपग्रह यान है उसे अंतिम तिथि चरण से अलग कर दिया जाएगा। ये करीब समझ लीजिए हमें 16 मिनट 52 सेकंड लगेगा जब क्रायोजेनिक अपर स्टेज बंद किया जाएगा, और उसके करीब 7-8 सेकंड के बाद में जो GSLV-6 है उसे अलग किया जाएगा। हम इस समय 11 मिनट 40 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और 5-6 मिनट हमें और लगेगा यान को फाइनल डेटा देने के लिए, जब हम GSAT-6 को उसके पैरामीटर्स के हिसाब से यान से अलग कर पाएंगे। Thank you, Alok. The time is 7:14 seconds. We have another 300 seconds to go. Nominally, if you look at the flight sequence, we have the cryogenic stage, upper stage cutoff coming at 1010 seconds. So we are 300 seconds away from the actual burn out of the cryogenic stage. Thrust has been brought down to the nominal from 11% augmentation to nominal thrust of 7.5 tons. And in terms of velocity, as you can see here, relative velocity, which is 7.16. In fact, if you look at the inertial velocity, which is nothing but the Earth contribution of the rotation added to the relative velocity, could be another 0.5 meter per second extra. So right now, the inertial velocity is something like 7.7 kilometer per second. And the two plots on your screen, the bottom one, the altitude profile, if you look at the GSLV altitude profile, it's a very shallow trajectory, going at a very low altitude before it finally gets into a very high altitude of something like 220 kilometers to meet the perigee of 170 kilometers. View of the Mission Control Center. I think, I'm sure all the executives will be very closely monitoring the performance of the cryogenic stage. So far the altitude profile and most importantly the velocity profile has been very precise based on the pre-flight predictions. अच्छा राधाकृष्ण जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसा हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ट्रैकिंग मोड्स जो होते हैं, जब यान शार से प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उसके बाद राडार 1-2 इनको ट्रैक करते रहते हैं। उसके बाद इस समय जो पोर्ट ब्लेयर और जो वहाँ के शार के जो राडार हैं वो स्टैंड बाई मोड में आ गए हैं, जबकि सिंगापुर और ब्रुनोई के जो ट्रैकिंग वो राडार्स हैं वो ऑटो मोड में आ गए हैं। इसके बाद बायाक के जो सेंटर्स हैं, ग्राउंड स्टेशंस हैं, वो हमारे यान को प्रोग्रामेबल मोड में ट्रैक करते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि आप यान को सुरक्षित उनका पथ अपने ऑब्जर्व कर सकें। Yes, very right, Alok. I think maybe as the mission is an eastward mission going all the way at 104 or 105 degree azimuth, there are several ground stations that are put in the loop to monitor the various stage flight events depending on the visibility. So as you can notice here, we have ground station located at Shar, we have ground station located at Port Blair, Singapore, Brunei and Biak. Biak is the station which basically sees the final stage of cryogenic and also the satellite separation. This is a station which gives confirmation of the successful burn out of the cryogenic stage and the satellite separation. So 867 seconds, 8.25 kilometer, 1 more kilometer velocity addition is awaited. The vehicle has almost moved by 4,200 kilometers from Shar and it is at an altitude of 150 kilometers. जी हाँ, लगभग हम 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं। हमें प्राप्त करना है लगभग 9.785 किलोमीटर प्रति सेकंड का, और हम इस समय श्रीहरिकोटा से यान की जो दूरी है वो लगभग
4,366 किलोमीटर की। Yeah. The vehicle has, I just wanted to inform Alok that the vehicle has almost reached the orbital velocity. So basically to get into orbit, you may be aware we require something like 7 kilometer plus velocity before it gets into it attains the orbital conditions. So I just had a screenshot which was just displayed a minute ago, which showed the satellite is already in a perigee of 150 kilometer by apogee of around 8,000. So now onwards what happens is the next 100 seconds of flight, it will be the addition that will be going on in the apogee. So you will find gradually the apogee is going to get increased from 10,000 to something like 36,000 when actually the command for cutting off the upper stage is released. जी हाँ, हमें करीब पेरेजी 170 किलोमीटर की और एपोजी 35,975 किलोमीटर की प्राप्त करनी होती है, एक दीर्घवृत्तीय कक्षा। और उसके बाद उपग्रह में लगा हुआ लिक्विड एपोजी मोटर लैम जो है वो स्वतः ही उपग्रह को अनेक चरणों में सीधे 36,000 किलोमीटर की जीएसओ कक्षा में ले जाएगा, भूतुल्यकालिक कक्षा में ले जाएगा। इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार सर, शिवन सर, सोमनाथन जी, डॉक्टर अन्ना दोरई, मोहनलाल सर, सभी बड़ी बेसब्री से इस चरण के निष्पादन को देखते हुए। Another 20-30 seconds to go into the flight. The vehicle is already attained the perigee of 160 kilometers, apogee of 24,000, another 12,000 kilometer apogee to be attained. But as I was telling Alok, the apogee addition, every increment in velocity increases apogee very drastically. Before I mentioned 23, now it is almost as 30,000. Maybe another 10 seconds to go for the flight before the actual cutoff command is issued. Okay, GS2 shut-off command has been issued and the satellite is in 170 by 35,945. Exactly as per the pre-flight conditions, and the inclination achieved is 19.96 as against the pre-flight. And GSAT-6 satellite has been successfully separated. We just got the confirmation. A very happy moment in the Mission Control Center. This is Mission Director. Spacecraft separation is confirmed and GSLV D6 GSAT-6 mission is accomplished. जी हाँ, अभी आपने व्हीकल डायरेक्टर की घोषणा सुनी। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, उपग्रह को यान से पृथक किया जा चुका है और इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस समय हम अभियान नियंत्रण के एमसीसी के अंदर बिखरे उत्साह और क्रायोजेनिक इंजन की इस नई बहुप्रतीक्षित उपलब्धि में शामिल होने के लिए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आप देख पाएंगे विभिन्न संबोधन जो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक देश को देंगे। Thank you very much, Alok. With this wonderful feeling of success and very proud moment for the entire ISRO community, myself Radhakrishnan and my colleague Sri Alok, we are signing off from the Mission Control Center in Sriharikota. We go back straight to the MCC, where Chairman ISRO will be giving his address to them. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Good afternoon to all of you. Today we have demonstrated that what happened on January 5th of 2014 was no fluke. It is a result of the tremendous amount of hard work put in by the entire team to build in an indigenous cryo engine. And today's performance of the launch vehicle clearly demonstrates that all the systems have been performing very normally and the various intricacies of the cryogenic engine performance and the systems have been understood. I now request Uma Maheshwaran, the mission director for this particular mission, to say a few words. My dear fellow citizens of India, today ISRO has offered to the nation an Onam gift, an appropriate Onam gift, a magnificent, handsome and reliable launch vehicle with our own indigenous cryostage, a made in India cryostage.
capable of carrying 2 to 2.5 ton class of spacecrafts. As Chairman ISRO told, February 5, 2014 was a golden day in ISRO's history when the maiden success of GSLV with the indigenous cryostage was achieved and its performance was phenomenal. Hence, the onus was on us to maintain the standards set by that launch. And when you see the quick look results, this mission has achieved equally well the orbit. On February 5th, the then mission director, Dr. Shivan, told that the naughty boy of ISRO has been tamed. Today, my friends, I am really proud to say that this naughty boy has been transformed to the most adored boy of ISRO. And that has been made possible by the awesome and the fantastic team effort by all of you, Team ISRO. So let me take this opportunity to express our sincere gratitude to Team ISRO, cutting across the entire centers. Let me thank our beloved chairman, who stood behind us like a solid rock, without whose guidance and directives this launch could not have been achieved. Thank you, sir. I also would like to thank the center directors, the former chairman, former center directors, and all the seniors who had in the various review forums like MRR, FRR, etc., had reviewed the progress of the mission and cajoled and guided us in the right path. This has been indeed a remarkable journey. There have been many instances of exemplary team efforts like the 24/7 effort taken by the IPRC integration team along with the CUS team and the LPSC team in realizing the cryostage, the CUS project for giving us a beautiful CUS stage, the awesome professionalism, teamwork of SHAR team, especially the 33 days of realization of the cryostage at Technical Complex, the MEIT team who always rose to the occasion, the SRO, VSSC, LPSC and IPRC, IASU, who are always there as an omnipresent in roles, the various centers, the various entities of the centers in VSSC, LPSC, IPRC and ISU, who have always been ready to sacrifice to meet the project schedules. I can go on and on. I will also like to express my sincere gratitude to the entire ISRO family, who, let me say, have happily sacrificed to meet our cause. I also thank my own project team, who have sacrificed everything to achieve this great success. This has indeed been a great personal moment for me, and I thank my family also for bearing with me. I have very fond memories of my friend, philosopher and guide, and our dear colleague, Sri Manoj Kumar, the chief architect of system integration of this GSLV vehicle, who is no longer with us. Before concluding, let me also say that Chairman ISRO has already given us the date for the next launch, and as you all know, our chairman never changes the dates. So let me assure you, sir, that with this fantastic team ISRO, we will be back here for the next launch by April for a possible launch of June, July for next GSLV launch. Thank you. Jai Hind.